पैदा होती है उसको नहीं पता होता कि यार मुझे ये करना है क्योंकि मेरे अंदर ये जज्बा है. इट हैपन्स एज यू एक्सपीरियंस लाइफ. आई ब्रोक डाउन. मैं क्या, मैं कैसे कर सकती हूँ किसी के साथ ये. लेकिन बाकी चीज़ों में आपको पता चल जाता है कि सीरियस कैंडिडेट कौन है और कौन विंडो शॉपिंग कर रहा है. बट एनीथिंग ड्रिवन बाय पैशन एंड हार्ड वर्क, इट विल ऑलवेज टेक यू टू बिगर हाइट्स. Hi, my name is Faria Sayed. Welcome to Unboxing Success. Today's guest is not your typical HR pro. After 15 years of experience in HR, Nida Yousuf still leads with empathy and a people-first attitude, which has enabled her to drive lasting change in every organization and industry she has been a part of. Today we talk about what we can learn from Gen Z, our corporate trends just for show and tell, and how to measure employee productivity. I'm a big fan of therapy. I think every single individual should spend some time in therapy. But in terms of company life coaching or company coaching, I do want to know how big the impact is in terms of productivity, in terms of company culture, and like, kya hota hai? What is the actual result? What do you believe and what do you tell other people? That's putting an HR person on the spot ना कि हम कौन सी वाली बात करें. नहीं, yeah, so it does have an impact, like I said, right? But fortunately, unfortunately, coaching is such an expensive tool. At least, I mean, and globally it is, of course. In Pakistan में तो it's fairly new. Executive coaches, आप normally अगर लेते हो तो you get, all these people from different countries come in and coach, your needs or whatever. But those situations में होती हैं. एक किसी के behaviors बहुत बुरे हों तो आप कहेंगे यार, you know what, this is a senior person needs coaching. एक वो element होता है तो आप जो है ना behavioral restructuring की तरफ चले जाते हैं. दूसरा आप कहते हैं अच्छा इसको हमें ना leader बनाना है तो इसको coaching की तरफ लेके जाओ. What I feel the missing gap is कि नीचे से जब हम ऊपर तक आते हैं कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एटलीस्ट इस वक्त स्टूडेंट काउंसलिंग इन द रियल सेंस ऑफर करिए. कुछ एक दो होंगी, उसके नीचे स्कूल्स में चले जाओ, बहुत कोई महंगे स्कूल्स होंगे जो ऑफर कर रहे होंगे. तो 80% ऑफ योर पॉपुलेशन डजंट हैव एक्सेस टू दैट, राइट. एंड जब ये बच्चे निकल के किसी अच्छी मल्टीनेशनल में चले जाते हैं और जब व्हेन दे आर एट अ प्लेस वेयर दे गेट ऑल दीज थिंग्स, तो द काइंड ऑफ व्यूज दैट वी शेयर्ड अर्लियर, फर्स्ट इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेज कि हाँ ठीक है, सही है, क्योंकि उसके बाद आपका प्लान बनेगा, हाउ यू मेड शिफ्ट्स इन योर प्रमोशंस आर डिपेंडेंट ऑन इट, 3 कोर्सेज और चेक करने होते हैं. सो आई वुड से इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस. हाँ, थोड़ा सा टिक मार्क बस हो, टिक है लेकिन इवॉल्व भी कर रहा है. अगर आप ये सोचना मुस्तकिल आपके साथ एक लाइफ कोच या आपके साथ एक कोच अटैच्ड हो फॉर डेवलपिंग यू इन सर्टन एरियाज, एंड इट्स नॉट जस्ट एन HR इनिशिएटिव. कहीं ना कहीं at some point repetitive words will create your brain to start thinking on those lines, and if it is continued शायद change behaviors आएंगे, but it is a time consuming process. पाकिस्तान में more so because I would question a lot of coaches जो आके कर रहे हैं, are they certified for example NLP में या बहुत सारे और certifications हैं. How have they practiced? Have they really gone through a lot of psychological nuances that need to be put in place? तो ये, I mean, it's still growing in Pakistan, but it's an evolving process. It can't happen on a 12-month improvement plan process that we put in place. I think जो वही बातें हम स्कूल या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी देखते हैं कि वो हम कि वही बातें, वो 6 बच्चे हैं जो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में होते, शायद वो सीखने के लिए गए हैं वहाँ, एंड दे विल फाइंड टीचर्स, दे विल फाइंड रिसर्च कर लेंगे कुछ भी करके, एंड दे विल फाइंड देयर ओन वे. और बाकी लोग कहेंगे यार ये स्कूल ही बुरा है, ये ऐसा है वैसा है, हाँ अगर तुम यहाँ पढ़ते तो ये होता है. तो वो वहाँ पढ़े यहाँ पढ़े डज नॉट मैटर. वो बच्चे कहीं ना कहीं शायद सो बट वो एक बहुत छोटी परसेंटेज होगी. बट आई थिंक मोर लाइक 80-90% लोगों को वो उसी स्टैंडर्ड से ही गुजरना पड़ता है शायद कहीं ना कहीं. एंड देन फिर यही है कि देन मे बी दे डू नीड ट्रेनिंग, दे डू नीड लाइफ कोचेज, उस तरह से सपोर्ट चाहिए होती है उनको. बट इसमें एक एलिमेंट ये भी है ना, राइट, दैट फॉर एग्जांपल अब जैसे आप नोटिस करते हो कि parenting styles have also changed, right? People now, you probably the way you were spoken to as a kid, you will not do that to your children, right? So actually, I want to, but I can't. You want to because they'll be like, I mean, like, I want to be your friend. Exactly, right? और पहले ही होता था ना कि parents are not your friends. वो तो पहला वो होता है जब कहते हैं कि what, if you're feeling bad, let's talk about it. Is something bothering you? हमें पता होता है हम बता देंगे तो बहुत ही कुछ गलत हो जाएगा. But it actually starts from there because ये नहीं हो सकता
कि आप एक जगह जा रहे हैं, 1 घंटे की कोचिंग मिल रही है और वापस जाके आपको वही चपेड़े पड़ी, इट विल नॉट, द इकोसिस्टम इज नॉट कंड्यूसिव फॉर इट. But that's a good thing, right? We want that change. Eventually, and like I said, it's evolving. So Yeah. for a country like Pakistan, I Yeah. think, which is with its own set of challenges, Yeah. चीज़ें हो रही हैं. आज से शायद 10 साल बाद ये चीज़ें जब mature हो चुकी होंगी, then definitely probably we'll see a lot of that in schools, not just restricted to certain schools, not restricted to certain universities. तो एक पूरा life cycle बन क्योंकि जाएगा. जैसे आप कह रही हैं चपेड़े पड़ रही हैं, मे बी हमारे घरों में नहीं पड़ रही, लेकिन कुछ घरों में अभी भी पड़ रही हैं. बिल्कुल ऐसे है, बेशक. एंड लाइक अभी भी वर्क प्लेसेस में लाइक चपेड़े शायद नहीं पड़ रही हो, लेकिन देयर इज एन इक्विवेलेंट ऑफ दैट. लाइक people are getting yelled at, people are, some people are getting, yelled at, and people are getting, there are consequences to actions. What should workplaces do to feel more safe? Yeah, so I will speak about the companies that, the industries that I've had the opportunity to work in. So every company has a code of conduct and every company has all these speak up channels and stuff. People are encouraged to talk. And I think where required, actions are taken. However, is that uniform across all companies in Pakistan? I would still question that, because you're right. There are always backlashes, there are consequences, and that happens when you don't have maturity within the leadership, which also sort of psychologically goes back to the same point कि शायद हम feedback नहीं ले सकते, या हमें लगता है हमारी बुराई कोई कर रहा है तो कैसे कर सकता है कोई. So egos kick in, and I think again that too is now being changed. अब actually words आ गए हैं ना इस तरह के. अब people understand, अच्छा bullying का ये मतलब है, gaslighting का ये मतलब है, you've got different personality types. So जैसे जैसे awareness आती जाएगी, but companies generally have their papers right, and there are processes in place. Talking about life cycle, so let's go back a little and tell us about how did you end up in HR. मतलब obviously लोगों के घर में डॉक्टर इंजीनियर होते हैं तो वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, but obviously ये it's a fairly new as in obviously अब तो बहुत लोग हैं इस फील्ड के अंदर, but in terms of हमारे पेरेंट्स या उस ज़माने में शायद ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं था कि बाबा बोले अब बेटा HR में जाना है, so नहीं था. So how did you end up here? Were there teachers that encouraged you? Did you accidentally go there? या तुमने कहा यार सबसे आसान है, लगता है मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी ये कर लूँ. So what was your how did you end up here? Kids listening right now, students listening right now, what should they why should they choose HR? What should be those characteristics? Personality में आपके होने चाहिए, things that you think you're good at. What should they be looking for? कि यार अच्छा these 3 things check हैं मेरे, तो maybe this is the field that I should get into. Like you said कि हर किसी को लगता है यार BBA कर लो, business में चल जाओ, marketing कर लो, but why HR would be your thing? If क्या आप ऐसा process? Yeah, I feel so of course it's not restricted to certain personality types, but I think if you have opportunities, you should experiment with everything. But at least my mantra has always been कि if I feel I can excel in something, that is something that I'm going to do. Dusra, as far as HR is concerned specifically, I think to me having the ability to balance your personal emotions and to be leveled, because ऐसे बहुत instances होते हैं if you're an HR person where you really want to scream out, right? Because you have your own set of issues as well, right? आप भी सारा दिन काम पे होते हैं, उन्हीं लोगों के साथ होते हैं. The ability to be just, I think that is very important. And something that I always tell people कि अभी एक बहुत बड़ा wave भी आया था, companies are restructuring all the time, or you're doing things where you have to let people go in some way or the other, whether it's performance or whether it's whatever. ये इतना इमोशनली वेइंग टास्क होता है किसी भी इंसान के लिए, उस वक्त मेकिंग श्योर दैट योर इमोशंस आर इन चेक. एंड आई थिंक एज आई वाज ग्रोइंग इन माय करियर, आई स्टिल रिमेंबर इन माय सेकंड जॉब आई हैड टू डू समथिंग लाइक दैट, और मैं शायद आई डिड व्हाट आई हैड टू, बट आई ब्रोक डाउन. मैं क्या, मैं कैसे कर सकती हूँ किसी के साथ ये. एंड देन ओवर टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि अगर इफ़ आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो डिसीजंस हैं वो बैलेंस्ड हैं, वो डिसीजंस ठीक हैं, दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी and vice versa, right? Also for the employees, then it's fine, then it's okay. And there's a lot of counseling that you need to keep doing to yourself, because लोग आगे पीछे आपको 100 बातें बोलेंगे, right? एक तो ये है. So balance is very important, and then not getting stuck into
fads, having the right level of empathy. और ये realize करना कि अब जिस तरह का HR है versus what it was 15 years ago, you need to have a very strong streak of creativity, and at least this ability to say कि अच्छा we're going to do something differently for the workplace, whether it's the way you're designing a workplace to the culture that you're trying to shape. ये सारी चीज़ों के लिए आपको creativity चाहिए होती है. I would say these 3 or 4 things, which of course overlap with a lot of other things as well, but primarily this. I think being just and fair in every process that you govern, to me is the topmost thing. मैं अगर लोगों को लगता है बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल काम है फिर when you think about all of this कि you are responsible for people's careers, कि अगर आपने किसी को फायर करना है या किसी को हायर भी करना है, and hiring the wrong person, firing the wrong person, and it could have a real emotional effect on you कि आप 3 दिन तक यही सोच रहे हैं कि यार मैंने क्या कर दिया. हमसे गलती तो नहीं हुई, बिकॉज आप उस इंसान को नहीं, आप उसकी पूरी फैमिली को इम्पैक्ट कर रहे हो ना. आप एंड अगर आपके अंदर एम्पैथी थोड़ी ज़्यादा है, जैसे व्हेन यू डू ऑल दी साइकोमेट्रिक थिंग्स, यू रियलाइज अच्छा मेरा किस साइड पे आई एम मोर ड्रॉन. अगर वो बैलेंस्ड नहीं है, यू डोंट लर्न टू बैलेंस इट. या तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे या लोगों को डिप्रेशन में डाल देंगे. समथिंग्स गोना गो ऑफ समवेयर. So now you're considered one of the leading HR gurus as we know. So what was your first interview like, and now that you retrospect now that you think about it, what mistakes that you made, or how do you remember it? I remember each and every moment of walking into that room. Okay. And please start from the start. from the start तो यही था कि I think I was doing my bachelor's and at that time मुझे था बस मुझे नौकरी करनी है and all of that. And उस टाइम तक इतनी conscious नहीं थी about HR. But then I think when I was starting my masters, I got an opportunity कि there's this role, contractual role है, बिल्कुल operations का है, HR का. Is that something you're interested in? And I said जो भी है नौकरी है, HR लिखा हुआ है साथ, तो that's something I really want to do. I remember going there and the people who interviewed me are still my mentors and we're still in touch. But I remember talking so much in that interview because मैं इतना oversell कर रही थी अपने आप को, और जो मैंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था वो सारे terms में, just like I still have that habit, I would write all the terms down and I would मैंने बहुत oversell किया था. आज शायद अगर मैं देखूँ the way people are prepared for interviews now, अब जो scripts दी जाती हैं तो मुझे हंसी बहुत आती है, लेकिन I think it had its own innocence to it and I think it went well, right? Now you're on the other side of the desk. What are some red flags when you're interviewing candidates? So I think red flags to me would be if the story doesn't match at all, if the dates don't match, if the experiences or the skill sets they claim to have, they cannot justify it. And इसमें मैं बिल्कुल वो नहीं देखती कि अगर somebody is not super awesome at expressing themselves, but I think with time you realize कि कौन सही बोल रहा है कौन नहीं. I think to me values systems are very important. If I see that is not in place, to me that's a red flag, because आज शायद somebody at 24 is interviewing and you're like ठीक है, but when that person grows within the organization, these are things that could be deterrent to the organization as well. But and little passion also. अगर कोई सिर्फ ऐसे ही आ रहा है just because पापा ने बोला है कि get some work experience, so I think I wouldn't really. I would probably look at somebody who has a lot more passion, wants to excel. I couldn't agree more. I hate when a candidate comes in and I ask them the question, do you have any questions for me? And they're like, no. I mean, I just really, really want them to ask any question at all. I'll give you an example. So one of my friends, so exactly यही बात, मैंने उसको भी यही बोला. वो दो दोस्त हैं आपस में, दोनों इंटरव्यू देने गए और एक को मिल गया एक को नहीं मिला. सो मैंने कहा भाई तुम्हें क्यों नहीं मिला? कहता यार मैं उसके पास गया, मैंने उससे स्टोरी सुनी तो नाउ आई अंडरस्टैंड क्यों नहीं मिला. तो क्या था, कह रहे हम दोनों गए एंड द इंटरव्यूअर जो था वो उसने हमें लेट बुलाया, आधा घंटा लेट बुलाया हमें अंदर, दोनों को अपनी अपनी तरह. तो कह रहे उसने मेरा इंटरव्यू दिया, बड़ा अच्छा हुआ. उसने एंड में मुझसे पूछा डू यू हैव अ क्वेश्चन फॉर मी, तो मैंने बोला नहीं जी, आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग. कहता थैंक यू वेरी मच, आ गया बाहर. तो जब दूसरा गया उसका इंटरव्यू हुआ और उससे एंड में उसने पूछा कि भाई यू हैव अ क्वेश्चन फॉर मी, तो उसने बोला सर एक बात बताएं, आपने हमें 11:30 का टाइम था, आपने हमें 12:15 बजे बुलाया है, इतनी लेट क्यों बुलाया? तो कहते हैं ही लुक्ड एट हिम, थोड़ी देर थोड़ा गुस्से में कि ऐसे क्वेश्चन. कहता है यार तुम्हारी भाभी जो है ना सुबह से फोन कर उनसे तंग कर रही है ये सो ही लाइक. एंड देन कहता है उसके बाद आधा घंटे तक वो बातें करते रहे इस बारे में. फिर कहता है मैंने उनको एक प्लम्बर का नंबर भी दिया और लाइक सो दे जस्ट गॉट टू नो ईच अदर. सो आई थिंक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मिस करते हैं, दे हैव सच अ
फसाड जो वो प्रेजेंट करना चाहिए, लाइक ओवर सेलिंग की बात है कि देर जस्ट ट्राइंग टू शो अस कि नहीं हम बहुत पैशनेट हैं और हम बहुत काम करना चाहते हैं एंड वील डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. Don't oversell. Tell them what your skill set is, what you're good at, and then ask us questions जहाँ हमें भी लगे कि यार आप you really want to know about us also. Us as well. I think it's often we forget that there's a basic human connection. We put on this facade. You are so much more than your CV. And that's why we have an interview, right? CV से मुझे याद है, so एक CV हम किसी का इंटरव्यू कर रहे थे एंड आई रियली लाइक्ड द कैंडिडेट. मैंने कहा यार परफेक्ट है सेल्स स्ट्रैटेजिस्ट के लिए, सब कुछ बहुत अच्छा था. सो एंड में बस बिफोर शी लेफ्ट वी वर लाइक बस ठीक है, पैसे भी तय हो गए, जनरल बातें हो गई. सो वन ऑफ आवर GMs केम इन एंड ही वाज लाइक यार आते उनको मैंने CV दे दी. मैंने कहा शी इज़ द पर्सन. वो लेट आए तो देखते देखते लास्ट लाइन में उसने लिखा हुआ था कि ना स्टडीड समवेयर फ्रॉम UK करके कुछ. तो उन्होंने बोला अच्छा UK यार मैंने भी वहीं से पढ़ा है. तो कहाँ थी तुम UK में? नहीं वो एक्चुअली ना थोड़ा सा वो जो ना स्पेलिंग्स का कुछ मसला हुआ है. क्या मतलब? वो UK नहीं वो KU है. अच्छा हमने भी ऑब्वियस अब शुरू में सीन हमने कहा चलो यार UK का एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा एक्सपोजर बड़ा होगा. तो मैंने कहा UK KU इतना कन्वीनियंट. हमने कहा चलो कोई बात नहीं. सो दैट वाज द फर्स्ट रेड फ्लैग. फिर पता चला एक के बाद एक एंड आई रियली लाइक्ड हर. आई वाज लाइक यार कोई बात नहीं, चलो गलती हो सकती है, बच्ची से गलती हो गई, कोई बात नहीं, आई विल स्टिल इग्नोर इट. बट देन वन आफ्टर द अदर रेड फ्लैग्स जब नजर आए हमने कहा यार नहीं हो सकता. सो समटाइम्स if you were just being honest about who you are, what you do, it doesn't matter किसको impress कर रहे हैं आप. And see आजकल and up to there's a term for it, right? I mean, so the concept of authenticity in all of this is actually huge. Up to it's actually a skill जिसके against you rated, not just at a junior level or whatever. कहीं भी आप चले जाएं, biggest leadership trainings that you're going to do as well. हर जगह authenticity की बात आ रही है कि यार whatever you are, you present that, whatever you feel, you talk about it, of course, respectfully, and stand up in an authentic way for what you believe in, because that is what brings in diversity. वरना तो आप robots के साथ काम करें ना, सब वही language बात करेंगे. तो authenticity is a thing. And अब ये कि if a candidate is not coming across as authentic, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा. और अगर नहीं पता चलेगा in certain cases, so then you have all these techniques that recruiters are trained on, कि जिसमें probing questions होते हैं. And that is why it's become a lot more scientific now, जहाँ पे you go through a series of psychometric assessments and then probing interviews. In a lot of companies, you'll find psychologists also sitting in and dissecting it for a lot of other roles या critical roles जो होते हैं. तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि आप एक टिपिकल तरीके से इंटरव्यू देने चले जाएं. आई थिंक हम अच्छे वक्तों में पहुंच गए थे वहाँ पे, बट अब तैयारी ज़रा डिफरेंट है. और राइट, आई मीन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस बिफोर दिस गॉट स्टार्टेड कि CVs बनाने कैसे हैं. बिकॉज अब सबके अंदर वो अवेयरनेस आती जा रही है ना. पहले वो एक 2x2 की तस्वीर हम चिपका देते थे. अब ऐसी कोई तस्वीर इट एक्चुअली टर्न्स यू ऑफ के व्हाई वुड यू पुट योर पिक्चर, बिकॉज इट कुड क्रिएट a bias, right? I may find somebody very good looking and say अच्छा मुझे इसको interview करना है, and that shouldn't happen, and vice versa. And there's different there's multiple forms of bias. I mean, religious bias भी होता है, obviously pretty privilege भी होती है, and I mean, at least in my opinion, Pakistan में other side of the bridge, we don't hire these people. Which university? I was at an organization where we only hire people from 2 universities, or if they studied from overseas, which, I mean, obviously these are not things that I personally think that they should not be official policies, and it's not written down anywhere, but practice में ये आती हैं. बिल्कुल ऐसा. तो as far as I know, कुछ multinationals में now they have blind tests, skill sets होती हैं. So what's your take? Is this a better way to go about hiring? That too, I think now you'll find a lot of tools out there. I think there are more than 1,000 different ways of testing people where this term of recruiter bias is being mitigated. And उसमें it starts from the very basics, such as you said, so resume पे चीज़ें ही नहीं डालें. अब आप इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल नहीं पूछ सकते जो हमसे पहले पूछे जाते थे. And so on. Also from the way that you're taking or conducting these assessments, from the way you're probing through the process, from the way the blind testing is happening. So वो सारा I think eventuality ये है कि कोई भी human bias ना आए, and it's more of a scientific process rather than anything else. Of course there's always going to be slippage. आप कहते हैं यार मुझे बस इंटरव्यू से सही नहीं था, मुझे पता है बंदा काम कर रहा है. बाज़ दफ़ा ये इंट्यूशन भी होती है.
and it's not wrong to go with it either. I would also say कि ये भी नहीं होना चाहिए, and ये बहुत ऐसे instances में होता है, psychometrics would come out, it would look like you've got a miserable person on the other side, कहते यार ये बंदा तो आके जो है ना तबाही कर देगा इस कंपनी में in a bad way. But you know, the more you talk to those people, you realize, and that is also another way, right? Where in a lot of psychometric trainings you're told कि जो इसमें लिखा है ना उसको एक दफ़ा validate करो बंदे से बात करके, क्योंकि those are indicators or guidelines of what the person potentially could be in. Give us an example. ऐसा candidate that you thought would be a disaster and then you met them and talked to them. Yeah, so for example, हमने एक बंदे का profile किया था and उसका extremely aggressive, non-integrity इस तरह का एक, so 4 quadrants में होता है वो. So one of the quadrants appeared like a person who would be very aggressive, who would come in, who would get into a lot of conflicting situations and stuff. And वो ऐसा था कि that based on that psychometric, obviously nobody wanted to meet the guy, right? And this was for a one of the airport positions that we were looking at. अब obviously वहाँ पे customer service इतनी है कि आप ऐसा बंदा तो कभी भी नहीं रख सकते उस role में. However, every time we went through a series of interviews, from the screening to talking to the guy, and I felt, yeah, this doesn't match. Is this even the same person? And then, फिर इस case में होता है कि जब आप validation करते हो, they say, you know, from the psychometrics that you've done, it appears that you have this tendency. हुआ ये बाद में पता चला कि इसमें ना एक timing भी होती है कि individual ने कितनी देर में ये test attempt किया है. पाकिस्तान में साइकोमेट्रिक बड़ा अच्छा, उसको लगा कि कोई मैं 10 मिनट में कर दूं बस, ये ठीक है. दूसरा ये कि आप ये भी कहते हैं कि उस वक्त वो इंडिविजुअल जिस फ्रेम ऑफ माइंड में होता है वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है. सो अगेन ऑफ कोर्स वी डिडंट, एंड आई यू नो डोंट वांट टू गेट इनटू द स्टे, बट द पर्सन वाज गोइंग थ्रू सम पर्सनल सिचुएशंस एज वेल, एंड वी टुक दैट रिस्क of getting that person on board. Of course not at the level that the position was originally for. We downgraded the position just to see if he can grow into that role. And I think that person is still there, and I'm talking 14 years later. Oh. And one of the success stories of you know, this organization. And I think, and I'm very happy to say that baaz dafa too scientific also doesn't make you, you know, your own gut or your own experiences of people can help you shape the right decision. The worst interview you ever was a part of? इसमें लगा कि यार ये बहुत हैं. Tell us, you know, your favorite ones. यार, so candidates जैसे, you know, आप उनसे कुछ पूछते हो क्या, this is yeah, ये वाला. And you know, so actually, and then you're like, and then people who try to talk to you in a way where you just probably makes the interviewer feel a bit more uncomfortable. Okay, what's your expectation? What do you think my expectation should be? I actually had such people take interviews and think that it is their right to get selected, not having basic etiquettes of walking into an interview, because eventually it's a discussion between an organization and a person, and this marriage that has to happen. अगर उसकी उस process के लिए respect नहीं है, and that is what I, you know, have noticed in the interviews where I feel. For instance, क्या ऐसा हुआ? यार ये कि you know, you're walking in late into the interview, or you're coming in with zero preparation, or you have zero respect for the company on the other side. And one such thing, and ये हो सकता है बहुत traditional लगे लोगों को, लेकिन जब आप कहते हैं ना, अच्छा, so I'm sure you've done some research about the company, and people are like, yeah, I didn't really get a chance. Now that's really disrespectful. You don't realize it, but आप दूसरे वाले, you know, when you talk to a company on the other side, means that you don't have the basic etiquette of taking out 5 minutes to go over or prepare for a job that you claim you really want. That's not on. Or going on and on about the fact that I have 3 or 4 other offers in hand. Again, very disrespectful. This is not a negotiation process. और ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, मतलब I think in 17 सालों में मैंने, you know, काफ़ी interviews से मैं गुजरी हूँ उस तरह से, and these are some of the things that, you know, तो आपको एक over time अपना pattern भी पता चल जाता है कि यार ये 2-3 चीज़ें अगर इसने बोली ना तो मैं I mean I'm really going to lose it, you know. But that's just how it is. I think, and to me, being respectful in any interview or any conversation in general is super important. I remember an interview, so he started preaching us. आप लोग जो है ना, आप लोगों को इस तरह से करना चाहिए, आपको इस तरह इंटरव्यू कॉल करना चाहिए. You told me last night खाली ये वो.
I'm like यार भाई I'm really sorry यार, हमसे गलती हो गई, हमने आपको बुला लिया. नहीं बट पता है ऐसे ऐसे तो ऐसा बहुत होता है राइट, अलॉट. अब तो खैर ज़्यादा होता है बिकॉज अब ऑब्वियसली यू गॉट मोर वोकल कैंडिडेट्स कमिंग एंड स्पेशली द जनरेशन दैट यू नाउ डीलिंग विद. मैं फिर भी कहती हूँ कि चलो अगर उसमें भी इट्स अ प्रोसेस दैट दे आर अपोजिंग राइट, द वे ऑफ कोर्स दे विल पुट इट अक्रॉस इज वो, एंड समबडी कुड बी स्पीकिंग आउट ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन कि मुझे तैयारी का टाइम नहीं मिला, शायद मैं बेहतर कर सकता था. ऑन द अदर साइड में भी दैट्स व्हाट्स गोइंग इन देयर माइंड. लेकिन बाकी चीज़ों में आपको पता चल जाता है कि एक सीरियस कैंडिडेट कौन है और कौन विंडो शॉपिंग कर रहा है. सो एंड यू नो लाइक आई ऑल्सो, मुझे कभी कभी कैंडिडेट्स पे ये होता है कि आप व्हाटएवर रोल दैट यू थिंक कि मैं फिट इन कर सकता हूँ, and I'm like you should at least know what you're good at and you should come and sell that. आप अपना skill set बताएं, and even if you're open to other ideas, but at least tell us this is what I'm good at. For instance, you know, with vendors जब हम कभी select कर रहे होते हैं, and I remember my dad teaching me this, तो I remember बहुत सालों पुरानी बात है कि एक vendor आया तो उनसे उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या बनाते हो, तो उसने बोला सर आप जो बोले मैं बना दूंगा. तो मैंने नहीं, मैंने तुम क्या सबसे अच्छा क्या बनाते हो, उसने बोला सर आप मुझे टेबल बोलें, कुर्सी बोलें, लैंप सब बना दो. उन्होंने बोला नहीं एक चीज़ मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ तुम ये कुर्सी सबसे अच्छी बनाओ तो मैं तुमसे ये कुर्सी बनवाऊंगा. सो आई नो व्हाट योर एक्सपर्टीज है. हाँ मुझे टेबल बनवाना है मगर तुम अच्छा क्या बनाते हो, सो आई कैन जज यू ऑन दैट. तो आई थिंक कैंडिडेट्स का भी ये मुझे लगता है कि मसला है कि एक तो हर चीज़ लिखी हुई होती है, फिर ये है कि हर तरह का एक्सपीरियंस होता है, एडमिन भी किया हुआ है, सेल्स भी किया हुआ है, मार्केटिंग भी मैंने हर चीज़ मैंने की है. हाँ तो आप बताएं, आप जो मुझे बोलेंगे मैं हर रोल में फिट इन हो सकता हूँ कि नहीं भाई दिस इज नॉट what most people are looking for, and at least you should not be looking for a role that has everything, you know, कि कोई भी dimension में चला जाऊँगा. I think even if you have multiple experiences, but once it comes back to passion कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, where do you see yourself in 10 years. but ये भी एक मसला है ना, like I remember friend उसने मुझे यार मेरा कोई passion ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे कभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं करने को. So how do you find that passion, like how do you look for that passion? Yeah, and that actually that is the fundamental problem. Self awareness is a fundamental problem. Lack of, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, lack of counseling is a fundamental problem. कोई भी ना पैदा होती है उसको नहीं पता होता कि यार मुझे ये करना है क्योंकि मेरे अंदर ये जज्बा है. It happens as you experience life. And unfortunately there are some people who don't realize it, and they're the ones. And अगर ऐसे होता भी है ना आपके पास इंटरव्यू के लिए भी, you know, you have graduates coming in and younger people, and these are discussions that you need to start having with them, ideally in, you know, while you're in university. But if it doesn't happen, तो हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि यार आप उनको help them realize the वो क्या कहते हैं ना उसको, there's a specific term for it also, but help them realize this unfound passion that they have, or this potential that they haven't unleashed, or have them thinking in that trajectory कि अच्छा तुम सबसे अच्छा क्या करते हो, जिस तरह आपने बताया आपके वालिद साहब ने पूछा. आई थिंक एक्चुअली इट्स अ वेरी सिंपल बट अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. उस वक्त हो सकता है आपके पास जवाब नहीं हो, बट यू स्टार्ट थिंकिंग एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग यार मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ, एंड विच डॉट्स बैक टू व्हाट आई वाज टेलिंग, एंड यू नो यू आस्क्ड मी, दैट बिकम्स अ मार्क फॉर, you know, you can stand up and run with it, because if you have 10 people contesting for it and you genuinely know कि ये चीज़ मुझे naturally आती है और मैं ये सबसे अच्छा कर सकता हूँ और मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है, it's not work, ऐसा हो ही नहीं सकता of course coupled with hard work कि you don't succeed and you don't realize कि वक्त के साथ साथ आप उसके लिए और passionate होते जाएंगे. And ये भी हो सकता है 10 साल बाद you realize there's another passion that you have, and it's probably, you know, stronger than the one you had earlier, and hence you have people changing career paths as well. But anything driven by passion and hard work, it'll always take you to bigger heights. I think कभी कभार मुझे भी लोग बोलते हैं कैसे मैं ये realize करूँ कि you know I'm good at a lot of things. मैं कहा जिसके बारे में तुम 6 घंटे तक straight बात कर सकते हो ना, मैंने कहा एटलीस्ट ये एक क्राइटेरिया मुझे लगता है, बिकॉज इफ समबडी आस्क्स मी अबाउट माय बिजनेस आई कैन जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, टॉकिंग एंड गिव देम एग्जांपल्स. ऑल्सो समटाइम्स आई एम वॉचिंग वीडियोज या आई एम इंटरव्यूइंग पीपल या आई एम टॉकिंग टू पीपल, और मुझे जब ये कभी कभी फील होता है ना कि यार वाई एम आई नॉट डूइंग दिस बिजनेस, वो इतने पैशनेटली अपने बिजनेस या अपने करियर या अपनी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो then you realize कि this person is really passionate because this is transcending, it's transferring. Yeah. Because vibes are for real, right? You can exude sense that. it. वो energy आपको पता चल जाती है कि है. And you feel like यार, for instance, even like I have friends जो कि यार तुम तो जैसे मीडिया में हो, तुम ये करते हो, but then when they realize कि even whatever interest, उनका पैसा अगर इंटरेस्ट है तो यार तुम तो बड़े पैसे बना रहे हो, यार हमारा भी लगा दो पैसे.
So you know, so it's like it's not just कि वो आपको देख के खुश हो रहे हैं, it's just कि आप जब पैशन को आप फॉलो करते हैं, you also वो जो कहते हैं ना कि money follows you, actually वो that starts happening because and then I think learning एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इंटरव्यूज देने आते हैं ना वो कि देर sometimes I feel the reason I reject them is कि वो सीखने नहीं आ रहे, ये वो सिखाने आ रहे हैं हमें, एज इन यू नो लाइक शुरू के ऑब्वियसली अगर वो 1 साल का एक्सपीरियंस 6 महीने का एक्सपीरियंस या फर्स्ट जॉब उनकी है एंड आई फील लाइक कि भाई यू शुड टेल मी कि सर मैं सब सीखने के लिए आ रहा हूँ, बजाय कि आप पहले अपनी 6 कंडीशंस लगा देते हैं कि जी ये तो मैं नहीं करूँगा, दिस इज़ नॉट माई वर्क, ये तो मेरे उस फोटे में नहीं है, हाँ दिस व्हाट आई कैन. सो इंस्टेड ऑफ दैट आई थिंक वही जैसे कि अगर आपको शुरू में पता ही नहीं आपका पैशन क्या है, आई थिंक यू शुड लेट पीपल गाइड यू. कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो यू चूज़ अ कंपनी, फॉर एग्जाम्पल यू चूज़ अ ब्रांड, यार मैंने इसके लिए काम करना है, मुझे सीखना है, मुझे 3 साल 5 साल यहाँ काम करना है. What would you recommend somebody who doesn't know what they want to do and they're going for their first interview? What should be the yeses and nos that they should take and project? In terms of skill set? हाँ. Yeah, in terms of skill set तो ये कि जिस भी आप position के लिए जा रहे हो, so read up on what's trending and know that though for example if you're a fresh graduate or you're somebody with less years of experience, एक तो interview से पहले what always helps is talking to other people in a similar field to know कि इस वक्त what are the bigger problems driving it, because जो मैंने चीज़ देखी है that often makes candidates successful is when you go and you talk about a pressing issue. जैसे आपने कहा ना कि यार अच्छा any questions that you would like us to answer. It always helps if a person says, oh you know what, so I was just doing my research and one of the things I've seen in the industry is, and you put forward a problem that उस फील्ड से रिलेटेड है. जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का कोई प्रॉब्लम हो कि जी आजकल मार्केटिंग बजट्स कंपनी से कम है, हाउ डू यू एंगेज मोर बायर्स और हाउ डू यू एंगेज मोर कस्टमर्स. अब जब आप ये सामने वाले से पूछेंगे और अगर सामने HR के साथ एक बिजनेस वाला भी बैठा हो तो वो आपको बताएगा हाँ यार एक्चुअली हमारे साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है एंड दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी आर डूइंग एंड दैट्स वर्किंग. इंस्टेंट कनेक्शन आपने ड्रॉ कर लिया विथ द इंटरव्यूअर ऑन द अदर साइड. दैट ओनली कम्स व्हेन यू टॉक टू पीपल prior to the interview and understand this. क्योंकि अक्सर ऐसे लूज क्वेश्चन है, what are some of the problems that you're facing in the industry? आप कहेंगे now I think as an organization we're doing fairly well, we're very committed to ये big standard से डील होती है जो देते हैं, तो वो मैटर करेगा. दूसरा जब आप अपने अगेन यंगर स्टार्टिंग करियर में होगे तो always talk about projects where you have been able to demonstrate hard work and you've been able to close projects despite whatever difficulties you may not have had that ability to take certain decisions. but वो जो thought process होता ना कि ये मेरा project था और मैंने इसको अच्छा. और एक चीज़ जो अक्सर candidates करते हैं ना, so I was leading this project, अरे भाई तुम अभी 4 महीने पहले इस कंपनी में आए, तुम कैसे, and we were doing this and then like अच्छा so I understand this project is really big but what was your role in the project? तो फिर वो बताते हो actually I was documenting it. So it's okay to say, you know what, this is a big project but I wanted to contribute, I wanted to put in I wanted to learn, I took care of the documentation part of it or whatever, and from that I learned ABC. It's also very important to talk about what you've learned in these projects, because अगर आप करियर शुरू कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी सब आपकी देखेंगे, ऑथेंटिसिटी देखेंगे, ड्राइव देखेंगे, आपकी एनालिटिकल अप्रोच देखेंगे एंड योर अप्रोच टू closing projects, because closers बहुत कम होते हैं, right? Got a lot of people who start amazing things and hashtag ये भी कर दिया, hashtag वो भी कर दिया, but people who can make it happen. And one last thing that I feel is super important is talk about impact. कि one of the projects that we had in our organization, you may not have been part of it, but the kind of impact it has had, it could be an impact on the economy, it could be an impact on the organization, on I don't know, maybe a certain बिल्कुल किसी कल्चर की इंक्लूसिविटी पे इम्पैक्ट, वेलबींग पे इम्पैक्ट. बट इम्पैक्ट की बात करें, सेल्स नंबर्स पे इम्पैक्ट, बट इम्पैक्ट की हमेशा बात करें. तो ये 3-4 चीज़ें जब आप इंटरव्यू देके निकलेंगे तो आफाका होगा. Such a huge success, and this is one of the questions that I wanted to ask you. You're someone who leads people, who is involved in mentorship. According to you, what is the path for a new employee to grow to success? I think at the end of the day I attribute a lot to hard work, to vision, and to just know what you want to do in life.
I think that clarity is super important, and it only comes with time and with experience. And always staying in a learning mode. Never thinking that you know it all. Because जिस दिन आपने ये सोच लिया कि चलिए मुझे सब आता है, that's that, right? And it's a very common thing that you hear people say, but it's actually for real. I think, for example, if I'm doing this for the first time, it's a learning that I'm getting, right? And it's something I will treasure and practice and take forward with me. Tell 10 different people about it. So you need to be in the sponge phase all the time. जहाँ जाओ वहाँ से चीज़ें सीखो, जिससे मिलो उससे सीखो. Because every person is an institute. The minute you start thinking that, oh, you know, मैं फलां जगह से पढ़ के आया हूँ और पापा की कि ऐसे आते हैं बच्चे बहुत ये है, या I've been in leadership roles for 30 years or whatever. I think you just tend to lose that spark, and you tend to lose that vibrancy that attracts other people to you as well, right? Sometimes people also feel कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि यार हम तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मैं तो इससे ज़्यादा काम करता हूँ, और you know हर किसी को यही लगता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं दूसरा नहीं करता. And sometimes I know friends, I know people जो मेरे साथ में होते हैं, मैं कहता हूँ यार I think तुम अगले 10 साल भी इतनी मेहनत करते रहोगे तो you will still be where you are. तुम्हारी थोड़ी सी प्रमोशन में लेगेसी एम्प्लॉय हो जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, तुम्हारे तो पैसे हर साल के हिसाब से बढ़ जाएंगे. बट वो मुझे लगता है कि कई दफ़ा आपके पास मेंटरशिप नहीं होती, और यू आर नॉट लुकिंग फॉर इट, कि आप किसी और पे बिलीव नहीं करना चाहते या किसी और की बात सुनना नहीं चाहते. यू लाइक कि नहीं मेरा स्किल सेट बहुत अच्छा है, आई एम गुड एट दिस, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर स्किल सेट. फॉर इंस्टेंस आई रिमेंबर दिस फ्रेंड ऑफ माइन टेलिंग मी कि यार हम दोनों का स्किल सेट सेम है, मगर उसकी तो वो तो बॉस के जो है ना मक्खन लगाता रहता है, तो वो तो मैंने कहा इट्स नॉट, मैंने कहा मक्खन लगाना यू कैन से इट लाइक दैट, बट हैविंग पीपल स्किल्स, having people to understand who you are, being close to them, learning from them, तो वो भी एक बड़ा important वो है. तो I think कहीं ना कहीं हम कुछ लोग हम ना यहाँ we get into that zone where we think oh this is what we know, this is very good, बहुत अच्छी बात. And that's where this whole progressive thought process entails a very very important concept of having a positive mindset. अब देखो companies के अंदर भी it's not प्रोग्रेसिव कंपनीज अपनी जगह है, बट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही इसीलिए कि एवरीबडी विल बी इन अ लर्निंग मोड इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. और दूसरा ये कि जो अब बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें आ रही होती हैं जिसमें पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड, ये वाले जो थॉट्स हैं ना, जो थोड़ी देर पहले आप अफर्मेशंस की बात करी थी, वो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है. एक तो मिजाज से जनरली हम सब बहुत शक्की मिजाज हैं कि अगर मैंने इसको बता दिया या ऐसे मैंने कहा मुझे हेल्प करो, तो ये ज़रूर मुझे तो मिसगाइड करेगा या दूसरों को जाके बोलेगा अच्छा भाई ये हो रहा है. आई थिंक हैविंग दैट बेसिक कनेक्ट विद पीपल एंड रियलाइजिंग दैट एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट विल हेल्प यू इफ़ यू आस्क एंड इफ़ यू हैव द यू नो जेन्युइनिटी एट हार्ट. ऐसा नहीं हो सकता है ऐसे एक दो केसेस हों, बट उससे भी आप कुछ सीखेंगे. सो ऑलवेज बी इन दैट माइंड सेट. आई थिंक जिसके अंदर वो क्यूरियोसिटी रहेगी, जिसके अंदर वो पॉजिटिविटी रहेगी, सी एवरीबडी वॉन्ट्स टू वर्क. आपकी पर्सनल लाइफ में भी होता है ना, आप हमेशा ऐसे जनरली ऐसे दोस्त बनाते हैं जब लगता है ज़रा थोड़े कम सियासी होंगे, जो सारा वक्त नेगेटिव ना हो. द पॉजिटिव पीपल हैव अ डिग्री ऑफ ग्रैटिट्यूड इन व्हाट दे आर सेइंग इन हाउ दे कंडक्टिंग देमसेल्व्स, जिनमें बिलीफ हो कि हाँ यार ठीक है दुनिया में कुछ अच्छा भी हो सकता है और आगे बढ़ना चाहते हो. इट कम्स विद अ सर्टेन फ्रेम ऑफ माइंड. एंड बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें लगता है बड़ी किताबी बातें हैं, बट एज यू continue to grow, you will always find some common patterns in successful people. There's always the saying, right? Ke be the dumbest person in the room. Surround yourself with people who are smarter than you, and then you and that's will why they also say, right, that if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Yes. Exactly. And I think that that's the concept of remote work, because one of the worst things about it is that you lose out on mentorship. You lose out on the actual training, because you cannot absorb, you know, the brainstorming, who else is in the room with you, because you naturally learn, you know, कि वो क्या है. मेरा भी क्वेश्चन एज इन आजकल जो बच्चों का कॉन्सेप्ट है या यू नो नए जो स्टूडेंट्स हैं और कि हम बीच पे बैठे हों, लैपटॉप पे काम कर रहे होंगे, वी सिपिंग पीना कोलाडा, और ये यू नो दिस इज द आइडिया. एंड यू नो एंड आई वाज टॉकिंग टू समबडी, मैंने कहा यार यू कैन बी वेरी गुड एट व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, यू कैन बी अ वेरी गुड कोडर एंड डू दैट, बट इफ़ यू रियली वांट टू सक्सीड इन लाइफ, मैं अपनी मर्जी से उठ के काम करूँ, मैं अपनी मर्जी से सोऊँ, ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक आप ग्रो कर जाओगे,
But मैंने कहा if you look at success, like you said, if you look at successful people, they will be working 10 to 12 hours a day. They will have a routine. So there are certain बहुत सारे successful लोग हैं. It's about what you look at success, how you look at success. But then again, if you want to be larger than life, if you looking for कि यार मैं इसकी तरह बन जाऊँ, तो फिर then you have to work like that person also. You can't be like वो जो work smart, work hard का जो misconception एक ये है ना कि हाँ we work smart but we don't work hard. I think it's a right balance. आपको you have to work hard also, you have to work smart also. And then grow also. तो ये जो concept है लोगों के जहन में, please clarify कि ये बीच पे काम कैसे हो सकता है. Is the digital is it nomad possible? I mean, we want to know. Is the digital nomad alive? Is the 9 to 5, 5 day a week? वो अभी जिंदा है क्या है? अच्छा, so obviously a lot of questions within this one question because ये topic बहुत अच्छा है. So पहली चीज़ तो I will just have my personal belief on ये hard work and smart work. See, I've always felt that you can never become a smart worker unless and until you've invested hard work into it. जब मैं शुरू में 12 घंटे किसी चीज़ पे लगाऊंगी तो शायद मैं एक वक्त पे आके I would have learned all the odds that can go against it and then come to a point where I realize कि हाँ यार अब मैं smartly कर लेती हूँ, मुझे कुछ जुगाड़ आती है, I know how to work around it, right? That is the route I have always taken if I was to. मुझे हमेशा से सबने कहा यार you're very geeky, very nerdy, why do you spend so much of time in planning and क्यों इतना सोचती हो? So I think मेरा हमेशा वर्क स्टाइल ये रहा कि आई वॉन्ट टू प्लान, आई वॉन्ट टू बी ओवर प्रिपेयर्ड. इवन बिफोर दिस वीन आई वाज जस्ट लाइक लेट मी नो कि क्या है, व्हाट्स इट्स अ कैजुअल डिस्कशन. आई वाज लाइक नहीं, मुझे आई वॉन्ट टू हैव सम फॉर्म ऑफ प्रिपेयर्डनेस टू व्हाट आई एम डूइंग, राइट? तो एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़ ये कि इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल नोमैड कॉन्सेप्ट, it's doable, right? And because that's how we're seeing, that's how it's been glamorized. बहुत cool लगता है कि अच्छा I'm sitting in some awesome resort and I'm doing all of that, and that is also something that a lot of people who are putting on their backpacks and they're making money on the way, वो भी एक ज़िंदगी ज़रूर है, and that is a reality. But personal preference अगर आप पूछें, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, but minimal or at least a balanced level of discipline in your life is a must. उसके बगैर ना आप you may not be able to do what, or you may not be able to like go beyond your limits, right? And if you want to exceed that, if you want to be par excellence, you want to break boundaries, you want to stretch every possible muscle out there and say, you know what, I can actually do better and bigger than this. You want to be a visionary, and again, don't take it from me. You read different autobiographies, you read so many things online, and you will realize सबका पैटर्न सेम है. जो भी बड़े बड़े लोग जिन्होंने एक्चुअली चेंज क्रिएट किया है, चाहे वो टेक में हो, चाहे वो नॉन टेक में हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिस्ट्स हों, चाहे somebody who invented, I don't know, whatever in the world, they have all had some form of discipline in life. And discipline is not कि आप सुबह X टाइम पे उठें और आप 9:02 पे चाय पी लें. मैं ये नहीं कह रही, पर मैं कह रही हूँ आपके पास एक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है. And as much as this is exactly opposite to what a lot of people now believe in, कि यार I want to wake up at my own time, like you said, have that flexibility. Sure, have that flexibility, but I will give you a very classic sort of example on that. जब ये ट्रेंड शुरू हुआ था ना फ्लेक्सी आवर्स का भी, और सब बहुत कूल चल रहा था कि ये होना चाहिए क्योंकि दैट्स हाउ प्रोडक्टिविटी इज़ एट इट्स ऑप्टिमम. ये बात बिल्कुल सही है. जिन कंपनीज ने इसमें इन्वॉल्व किया था और जिन कंपनीज ने कहा था दैट ओ यू नो व्हाट, इट्स फाइन, कम इन 2 days a week whenever, it's fine. You go back to all those companies today, and I'm specifically talking about Pakistan, but even if I was to give you global examples, I don't want to take names, but all those companies who said, oh, work from home is fine, working beyond borders is fine, everybody, including the biggest of the biggest names that you'll find in the industry, said we want our people back in the office and they have to spend a minimum of X hours in the office. Sahi tha, galat tha, they got a lot of hate for it, because there are certain decorums and basics that you can't do away with. ज़रूर flexibility होनी चाहिए, but एक X number of hours तो एक चीज़ को complete करने में लगेंगे ही लगेंगे, right? There's a certain level of work environment that you need as a human being, and that could happen at the beach. Can it happen at the beach for the rest of your life? I doubt it. I mean, things like that. So it's a very subjective thing, but in my personal view, I think it's chate parni hai and you want to do what is unimaginable.
preparedness, planning, some form of discipline, whatever that means for you, but just be around when the work is happening with the right people at the right time. ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है, और उसको अगर हम कूल नहीं समझते और उसको हमें लगता है कि oh that's not how I want to do it, then fine. It doesn't mean you won't be successful. But will you actually be able to create revolution? I'd be surprised. Also I feel एक और चीज़ होती है, जैसे बहुत सारे लोग जब अपनी जॉब एक डिस्क्रिप्शन में है और वो काम कर रहे होते हैं एंड देन दे टेल अस कि यार मैं आई एम बोर्ड, मैं कुछ और करना चाहता हूँ. मैंने कहा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाके तुमने यही करना है, वहाँ थोड़े दिन एक्साइटमेंट रहेगी, चलो ऑफिस थोड़ा अच्छा होगा, थोड़े पैसे ज़्यादा होंगे, बट 3 महीने 6 महीने बाद यू विल बी सेइंग द सेम थिंग. तो मैंने कहा आई वाज जस्ट टॉकिंग, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग रॉन्ग. मैं अपने सोच रहा था, तो मुझे लगा आई वुड वांट टू आस्क यू आल्सो, मुझे लगा कि इफ़ यू आर नॉट लर्निंग other than what you know, as in for instance, I can give you your example कि she is an HR person and I knew her कि वहाँ HR designation HR है, but when we we interacted for a project and then she was involved in design, she was involved in procurement, she was doing all of things. मैंने कहा यार ये क्यों कर रही है, ठीक है? And then I realized कि मैंने कहा ये कितना smart बात है. I think the company also feels कि यार ये department का जो है मे बी जो हाँ ये भी एस्पेक्ट होना चाहिए, दे शुड बी इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस, एंड आई थिंक बाय डूइंग दैट यू आल्सो लर्नड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड देन दैट एक्सपैंडेड योर हॉराइजन एज वेल, एंड नाउ योर सीवी इज स्ट्रॉन्गर कि यार मैंने तो ये भी करके दिखाया, आई हैव been part of all of these projects as well. Being an HR, इसका ये aspect भी maybe you explored कि यार शायद मुझे पता भी नहीं था ये कि ये भी होना चाहिए. It should be part of my job description also. तो do you think कि क्या specific to HR, what do you think कि एक तो recruitment policy ये है, इसके अलावा what else should HR people be looking for to excite themselves कि यार ये इसके अंदर और क्या avenues हैं? यार सबसे पहले तो HR people need to understand the business. बिकॉज हम पे एक छाप होती है यार इसको बिजनेस का तो कुछ पता नहीं, खाली आ जाते हैं एक्सरसाइज कराने के लिए, राइट, या वो फन फ्राइडेज के लिए. सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ HR बिजनेस पार्टनरिंग, दो इट्स वेरी कॉमन नाउ इन द HR वर्ल्ड, यू कैन नॉट बी अ ट्रू बिजनेस पार्टनर अनलेस अनटिल यू अंडरस्टैंड कि सेल्स अगर कम हुई हैं तो क्यों हुई हैं, एंड अदर देन जस्ट द पीपल एस्पेक्ट ऑफ इट, व्हाट वेंट रॉन्ग इन द इकोनॉमी, व्हाट आर द सेल्स लुकिंग लाइक, व्हाट इज द कंज्यूमर बिहेवियर लाइक, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग पता होने चाहिए. दूसरी चीज़ एज एन HR पर्सन, अब जिस तरह कॉन्सेप्ट आ रहा है कि खैर आ तो बहुत अरसे से रहा है बट अब इम्प्लीमेंट बहुत जगहों पे हो रहा है कि friendly workplaces, right? So that includes a lot of, like you said, administrative, procurement, supply chain matters. HR needs to understand how that cycle also works, because then only you can add your flavor of well-being and an ergonomically friendly thing into that, to say how this makes a conducive workforce which not just caters to a certain work environment but also attracts talent, right? Because अब लोग actually office भी देखते हैं. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं कि जहाँ के आपको एक्सपीरियंस लोग मिलते भी नहीं हैं, तो आपको दूसरी इंडस्ट्री से ही लेने पड़ते हैं. सो देन टू अट्रैक्ट देम, वही बात है, आपको फिर ऑफिस अच्छा होना चाहिए, आपका लोग अच्छे होने चाहिए, इन्वायरमेंट, कल्चर, इवन आपकी पॉलिसीज, वो तो वो क्योंकि जैसे लाइक यू सेड के कुछ इंडस्ट्री का वही फैक्ट्री है या माइनिंग है तो ज़्यादा काम इंजीनियर जो भरे में, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड कि यार क्या हो रहा है ऑफिस के अंदर, बिकॉज उनका मेन काम वो है, काम चल रहा है, ठीक है, दफ्तर में क्या अच्छा 4 कॉफ़ी मशीन दिला दो यार, ज़्यादा बोल रहे हैं ना थोड़े दिन. सो देयर इज नो पॉलिसी दैट काइंड लाइक दैट. बट नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट एक्सपेंशन, व्हेन यू थिंक अबाउट क्या इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंज, देन यू नीड टू ब्रिंग पीपल हु हैव दैट vision, who have those ideas, and then they can एक बात आई थिंक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन अपसेट हो गई, राइट? पहले आप कहते थे कि कंपनीज लोगों को शेप करती हैं, उनके करियर शेप करती हैं, बिल्कुल उल्टा हो गया. अब लोग जाके कंपनीज, कॉर्पोरेशंस, इंडस्ट्रीज को शेप करने लगे. अच्छा, ऑन द सेम क्विकली मुझे द सेम क्वेश्चन, इसका डिफरेंट वर्जन है. जब हम देखते हैं SMEs के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारी पाकिस्तान में इवन स्टार्टअप्स भी जो हैं कि ये जो HR का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे वो बेसिकली रिक्रूटमेंट है कि भाई लोग हायर करने, तो वही आपका कज़न, मामू, फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज में ये होता है कि यार हम कर लेंगे ना यार, क्या ज़रूरत है HR की, तो वो खुद ही कर रहे हैं इसको. या इवन ऑर्गेनाइजेशन हु हैव ग्रोन, उनके अंदर भी ये कि वो HR का कॉन्सेप्ट रिक्रूटमेंट तक ही है, या वो दे हैवंट रियलाइज्ड कि वो
ये पॉलिसीज ये इम्पॉर्टेंट कितनी है, एंड कहीं ना कहीं वो डरे हुए भी हैं कि यार ये आके कोई पॉलिसी बना देगा फिर तो हमें लोगों को एक्स्ट्रा बोनसेस देने पड़ जाएंगे, फिर तो हमें छुट्टियां देनी पड़ जाएंगी। फिर फॉर इंस्टेंस आई रिमेंबर आई हायर्ड समबडी लॉन्ग टाइम अगो एंड कोई छुट्टी पे जा रहा था तो मैंने पूछा भाई वो क्यों जा रहे थे, उसने यू कांट आस्क दैट, आप नहीं पूछ सकते हो क्यों छुट्टी। मैंने कहा यार इतना तो पूछ सकता हूँ मैं, कहते हैं सो यू नो लाइक आपका कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए होते हैं तो आप कहते हो कि यार शुड आई नीड इट, तो वुड यू रिकमेंड SMEs उनको क्या एक्चुअली पॉजिटिव साइड में दिखाना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बट हाउ शुड दे लुक एट HR? So I think whether you like it or you don't, you're performing some jobs of HR, right? So whether it's hiring or whatever, so you may not label, or those companies may not label it as HR. लेकिन ऐसे हो नहीं सकता कि प्रोसेसेस ऑफ HR ना हो रहे हों, राइट? शायद ऐसी कंपनीज में ज़्यादा एम्पैथेटिकली डिसीजंस हो रहे होंगे, हो सब कुछ वही रहा है, शायद यू डोंट हैव पॉलिसीज़ टू गवर्न इट, यू डोंट हैव पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि यू हैव ए स्पेसिफिक टीम, भले एक बंदे की हो, 2 लोगों की हो, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट बिकॉज processes and policies will always protect the organization and of course the employee also. लेकिन अगर मैं if I'm like you know the CEO or the founder or whatever, I would always see कि कहाँ पे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम at risk ना हो. See, we all understand कि ऐसी जगहों पे also when you're dealing with a lot of labor, for example, most of our courts are pro labor. So how can you operate without an IR function? How can you operate without an HR function? इसी तरह से किसी और कंपनी में चले जाएं, अगर SME भी है, यू विल फाइंड पीपल ऑलवेज कमिंग टू यू सेइंग ट्रेनिंग्स करा दें, ये कर दें, फला करते हैं। आप करा रहे होंगे, आप उसको HR ना कहेंगे, हमें HR की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सब हो ही रहा है। सो आई थिंक जस्ट ऑर्गेनाइजिंग इट इन अ वे वेयर यू नो यू हैव डेडिकेटेड पीपल टू डू द डेडिकेटेड जॉब, उससे हमेशा फ़ायदा होगा, आई थिंक नुकसान नहीं होगा, और वक्त की ज़रूरत भी अब यही है। एंड आई थिंक अगर नहीं होता फायर फाइटिंग तो आपको करनी ही पड़ती है कुछ, यू नो व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, बट विद HR इज वंस यू डू इट देन यू नो नेक्स्ट टाइम ये क्यों नहीं होना, या नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर हो सकता है, बिल्कुल ऐसे लेट्स मेक अ पॉलिसी फॉर इट। सो वही बात है कि इंडिविजुअली अगर आप पॉलिसीज बना रहे होते हैं देन अदर पॉलिसीज कि भाई एक को आपने कर दिया, अब दूसरे को भी कैसे करें, सो लेट्स मेक अ पॉलिसी जहाँ दोनों दोनों चीज़ों को And HR is of course it's securing the rights of both the employer and also the employee, for you know like say someone is specially abled or maybe they have an issue in terms of you know home, say someone has a health issue, to phir aap how would you deal with that? यार सो इफ समबडी स्पेशली एबल्ड एंड स्टफ, ऑफ कोर्स जब इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इन अ लॉट ऑफ कंपनीज यू हैव अ स्पेसिफिक कोटा आल्सो इन पाकिस्तान व्हिच enables that, but other than that I think every company would do this as a part of your social responsibility also. जहाँ तक कि दूसरी बात है कि if somebody has you know stuff happening at home and you feel that they're unable to perform due to that, there are always these functions within HR where you tell people to come out and talk, और ऐसा बहुत companies में अब होना शुरू हो गया है। You've got organizational psychologists almost present on the panel of every insurance company that you know now provides insurance to companies, or some have dedicated organizational psychologists even sitting in the office premises. I remember the first company that I ever worked with had this concept of an organizational psychologist. I remember वो जिस कमरे में बैठा करती थी वहाँ कोई नहीं जाता था, क्योंकि सब कहते थे हम जाएंगे तो बाहर आएंगे तो लोग कहेंगे कि हाय आपके साथ पता नहीं क्या मसले हैं, आप पागल तो नहीं हो गए। और इसी तरह से फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया था उनको, एक रिमोट जगह पे हमारा साइट था जहाँ पे यू नो सारा काम होता था, हमने उनको वहाँ भेजा। शी केम बैक लाफिंग saying that they would come to me saying कि बड़े पट्ठों में बड़ी तकलीफ शुरू हो गई है और हम क्या करें, ठीक है। फिर ये, और उस वक्त ये समझ आया कि बाज़ दफ़ा एज ऑर्गेनाइजेशंस हम वो इनिशिएटिव ज़रूर ले लेते हैं क्योंकि बहुत कूल बात है ना, आपके पता ऑन प्रेमिसेस अगर है, बट क्या लोगों को पता भी है कि इट्स ओके टू यूज़ इट एंड यू शुड, एंड द बेनिफिट्स। अब ऑन हाइंडसाइट आई थिंक आफ्टर 15-16 years when I look at something like this, things are still the same, and the funny part is the hesitation is also still the same. Not so much among your Gen Zs because they've grown up with this concept of you know therapy like you said, या ऐसी you know different tools या things that are out there, but back in the day ऐसा नहीं था। आज भी अगर आप, I think most households, और मैं आम आवाम की बात कर रही हूँ, अगर आप थेरेपी की बात करेंगे कि जी you know you tell your parents you want to go for therapy or you tell your spouse you should go for therapy,
अच्छा वो सब होता है. It's not a priority, it's not considered a super important thing. तो वो चीज़ आपको दफ्तर में अगर 1 घंटे के लिए मिल जाए, is it really going to have that impact? Maybe not now, but in the times to come. So yeah. अच्छा HR का एक और भी है, they're somehow also considered as the bad cop. Yeah. ठीक है, तो Always. ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी करना होता है, so you know they're the face. तो do you feel कि ये this you know like as in even though somebody likes you, but when you're making these Yeah. decisions and इसी ने बोला होगा, even though the company is making decision, इसी ने करवाएगा, मुझे पता है कि you know she is like that. Yeah. तो वो how do you deal with that? Is it On a personal front? हाँ. So मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता सकती हूँ. So this is probably about 10 years ago or something, right? I was working at an organization जहाँ पे we had to manage someone out, right? And the person we had to manage out was a very, very experienced person. Somebody I was very close to, and I used to look up to this person, you know, probably closer to retirement, and you know they always have wise things to tell you. And मुझे एक दिन पता चला कि जी इनको we have to ask the gentleman to leave. पहले तो मैं सोचा मैं तो नहीं कर सकती है, मैं कैसे करूँ? बट ऑफ कोर्स मैं भी करियर में यू नो शुरू में फर्स्ट एवर लीडरशिप रोल था, एंड बड़ी मुश्किल से मैंने ये किया, और शायद आज की तारीख तक दैट पर्सन डजंट टॉक टू मी. ठीक है, एंड दिस वाज अ पर्सन हु वाज लिटरली लाइक अ फादर फिगर इन माय लाइफ, एंड इट वाज वेरी पेनफुल बिकॉज मैं यू नो मैं बल्कि थोड़ी देर पहले जो मैं बता रही थी दैट यू नो आई एक्चुअली जस्ट ब्रोक डाउन बिकॉज मुझे हुआ कि मुझसे क्या हुआ है, राइट? बिकॉज I'd walked into this role, I'd walked into this company, first ever leadership role, हर जगह से pressures हैं, you know, you find this one person that you tag yourself to, जिनसे आप पूछते हैं यहाँ पे ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, what's the best way to move around, and it had to happen. Somehow at the end of the day, it was dictated by the title I had, it was dictated by you know the responsibility, and of course I had to do justice to my role as well. Do I think it was the right decision to date? I don't know. Right? I would measure pros and cons and सारा कुछ of it. But does it still feel bad? Yes, it does. Because I think कुछ relationships at work या कुछ आपकी associations at work ऐसी होती हैं जो बहुत and you know mentorship is actually it's like having a second set of parents you know somewhere, and you develop those bonds. तो होता है. How does it impact you emotionally and mentally? बहुत फ़र्क पड़ता है. एंड मैं इससे जब हम इससे पहले बात कर रहे थे, मैं बार बार ये कह रही थी कि यू शुड हैव दिस कोशेंट ऑफ बीइंग सुपर बैलेंस्ड, कि एवरीबडी विल थिंक इट्स यू, एवरीबडी विल ब्लेम इट ऑन HR, एटलीस्ट मोस्ट पीपल विल, आई शुडंट जनरलाइज. बट उसमें से निकलना और ये सोचना कि यार ये किसी का परसेप्शन हो सकता है बट ये रियलिटी शायद ना हो. अक्सर केसेस में ऑफकोर्स HR भी डिसीजंस दे रहा होता है, ऐसी बात नहीं है. बट शायद उस तरह की सिचुएशन में यू हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको अपने आप को बहुत समझाना पड़ता है. एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी समझती हूँ कि आपके पास बहुत बेनिफिट है. मैं एक और एग्जांपल एक देना चाहती हूँ कि एक कंपनी थी जहाँ पे हमने रीस्ट्रक्चरिंग की, ठीक है, और हमने एक कॉल सेंटर था जहाँ से वी हैड टू ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग गेट सम पीपल टू मूव आउट. एंड यू नो अ लॉट ऑफ यंग पीपल इन द कॉल सेंटर drawing say the minimum wage rate have stories of their own. You know, girls running the entire family, maybe they don't have a support system, guys trying to manage everything. But I'm not saying it's always the case, but कुछ आपके पास ऐसी situations आती हैं और वो भी बड़ा मुश्किल था. हालांकि ये शायद in the recent past situation हुई थी, and तब मुझे लगा कि अब इतना experience तो हो गया है कि मुझे वो feel नहीं होगा उस तरह. ऑफ कोर्स हुआ, क्योंकि जो आ रहा है जिससे बात कर रहे हैं सब कह रहे हैं अब ये कैसे होगा, फलां का इलाज किस तरह होगा, बच्चों की फ़ीस किस तरह पे करेंगे. फिर मैंने एक चीज़ सोची कि देखो मैं आई हैव टू डू जस्टिस टू माई जॉब, एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. बट व्हाट कैन आई डू ऑन अ पर्सनल लेवल? अगर इतने साल आपने एक इंडस्ट्री में गुजारे हैं, आप अपने दोस्तों को भी जानते हैं जो शायद सिमिलर फील्ड में होंगे, why don't we actually hire as an organization an outplacement agency to say these are the people, and this is where the trend started on LinkedIn, and you may have seen it, where after that every company that went through a series of layoffs started putting it on LinkedIn कि जी we heard that X has you know let people go, we're willing to hire, please send your profiles across. हमने outplacement external भी engage किया, हमने अपने दोस्तों को इंडस्ट्री में भी आगे पीछे बात की, और उसमें से हम 70% लोगों को एक्चुअली प्लेस कर पाए. और हमने एक्चुअली वो वी ऑल्सो यू नो पुट इट अप लेटर ऑन सो दैट पीपल नो दैट
again to close the loop ke if a company has taken a decision, it's not like they've forgotten about the employees. And this is really this was really good of that company to support this thought of mine. However, in the event कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो वो भी एक contingency plan मेरे जहन में था कि as HR folks we are always connected to different headhunters or placement companies. तो ये मिल के बात करना या ऐसे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना हमारी जिम्मेदारी एज पाकिस्तानीज भी है, बिकॉज वी हैव टू डू इट एंड वी शुड. a level of responsibility, a level of empathy. Of course, absolutely. अच्छा, बिफोर वी एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले बात की उसके बारे में बात जो शायद रिकॉर्ड भी नहीं हुई वो ये थी कि यू नो आई वाज सरप्राइज्ड दैट यू नो यू वर पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज बिग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे probably handling hundreds of people and you know you could do a lot of things that probably or shayad organizations mein you would not have been able to do, and we had been watching you on LinkedIn doing things and mashallah you know and you know improvement ki taraf cheezein ho rahi thi, and then you suddenly you know you recently shifted to another organization. So the reason that you told me, I would like to ask you the same question again. Why I shifted industries? Yeah. So it was a conscious decision. So the industry that I have recently moved into is a very traditional industry, and it's an industry everybody told me not to go in. Yeah, exactly. So I think and I spoke to like a lot of people. I spoke to my mentors. I spoke to people I worked with in my last organization. I absolutely love all of them. I think they have great ideas. And सबने मुझे कहा पागल तो नहीं हो गए हो? मतलब you're doing a lot of new things. फिर मैं बस एक चीज़ सोची जो मैंने उस वक्त भी सोची थी जब मैंने एक और सिमिलर तो नहीं कह सकते बट सिमिलर स्केल्ड इंडस्ट्री में काम किया था, एंड इट वाज बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान, एंड आई न्यू दैट अगेंस्ट ऑल ऑड्स आई डोंट नो इफ आई विल बी सक्सेसफुल, आई डोंट नो इफ एज अ वुमन बीइंग वन ऑफ द very few women in that workplace in an industry which is almost 99% male dominant, will I be able to survive? I don't know. I'm trying my best. Then I think we owe it to the country because some projects that are being now initiated in Pakistan are such that it needs us to work for it. Because कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी जो है वो पढ़ाई करें, अच्छी कंपनीज़ में काम करें, अच्छे ब्रांड्स अपने CV पे लगाएं, and when it's time to give back, you don't. And even if it's as much as writing a few policies or hiring women in remote areas and starting that trickle of you know that chain of change somewhere, I think that was my sole purpose. because हाँ यहाँ maybe you were mostly cities के अंदर इतना ज़्यादा focus यहाँ ज़्यादा था शायद, you know, बिल्कुल easier to drive change था ना, क्योंकि like minded लोग थे. अब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वहाँ पे शायद I'm probably not also like I'm not speaking the same language, I'm not from the same community, I'm not from the same province, I'm a woman. That brings with it a lot of challenges in the industry that I'm in now. But I'm very hopeful, or inshallah, God willing, we'll try to do what is right for the country. So yeah. It's also an opportunity. With challenges come opportunities, and hopefully that you will be able to make a difference here as well. Inshallah, we'll keep posting it on LinkedIn as well. very important. Very important. Very important. चलो निदा, थैंक यू सो मच, Thank you so फॉर much for कमिंग having इन. me. बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. एंड लाइक यू सेड अर्लियर कि जब आप सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं ना तो उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, और यू नो व्हाटएवर जितने भी अभी हमने इंटरव्यूज़ किए हैं ना उन सब में कुछ चीज़ें कॉमन है. उनमें से एक है एवरीबडी इज़ पेट्रियाटिक, जिनसे हम बात की तो कहीं ना कहीं आई थिंक लव ऑफ़ योर कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कैपेसिटी में वो, चाहे इवन आप सोचना भी आपका हो कि यू थिंक टूवर्ड्स दैट, बिकॉज अब की जनरेशन शायद इतना अटैच नहीं है. हम अभी भी सिनेमा में जाके खड़े हो जाते हैं जब वो तराना बजता है. बहुत सारे बच्चों में देखा नहीं होते. तो आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जो आपका जिससे आप जुड़े हुए हैं ना, जिस कहते हैं धरती से जिससे आप जुड़े हुए हैं, उससे प्यार करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए जब आप काम करते हैं तो आई थिंक इट्स गिविंग बैक, लाइक यू सेड, कि बहुत ज़रूरी है कि आप जब सक्सेसफुल हों, जब आपके पास मीन्स हों, जब आपके पास influence हो, तो you do something for your country as well, and that always is something that will be a long lasting thing, जो कि आप हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चों को या हमारे आने वाली जनरेशन को कोई उसका फ़ायदा ज़रूर हो. So thank you once again, बहुत शुक्रिया for your time,
and you've always been very nice and very kind. एंड एक और जो चीज़ जो कॉमन है वो कि अच्छे लोग जो है ना वो हमेशा फ़ोन का रिप्लाई करते हैं, मैसेज का रिप्लाई करते हैं एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने कहा तुम्हारे पास टाइम कैसे होता है, तुम मुझे रिप्लाई क्यों करते हो, बट दे लाइक यू नो दिस इज हु वी आर एंड दिस इज हाउ वी नो दे रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी एंड यू नो लाइक रिस्पॉन्सिव होना बड़ा ज़रूरी है आपको, क्या ज़्यादा से ज़्यादा ना भी कर सकते हो आप, बट एटलीस्ट यू शुड रिस्पॉन्ड टू पीपल, सो you've always been very very kind, so thank you once again. I hope you had fun. It was a great experience. Yeah, Amazing. and Thank hope you जाके so बोला आइंदा मैं कभी नहीं करूँगी ये, इतना नहीं, बुरा हुआ, मैं इतना नहीं बुरा अच्छा किया था, ना in मेरे fact साथ। you know I think it was my first experience and I'm glad I did it. Honestly I thought I'd chicken out but I'm glad I did it. नहीं So नहीं, thank you so much. I think you did a for great this. job, मज़ा आया बहुत and you were very open about things, so thank you once again, and ladies and gentlemen, this was the Black Box. We'll see you next time.